All right, death and destruction everywhere in Nepal at the moment. In fact, fresh tremors were felt in Nepal just a short while back. In a span of 24 hours, two major earthquakes have jolted Nepal, and the aftershocks reverberated through regions of northeast and central India as well. The quake measured 6.9 on the Richter scale with an epicenter in Kodari, which is about 80 kilometers from the Nepalese capital of Kathmandu. The quake struck even as rescue and relief operations are underway, and the teams are facing an uphill task in getting people out of the rubble. Aftershocks were felt all across north, east and central India, with some jolts being experienced in Rajasthan as well. All right, these are visuals that you can see from Nepal, and now the visuals that you can see on your television screens are from across India. Those tremors that were felt at around 12:39 this afternoon, which were felt from the west of India all the way up to the east, the northeast, from the north of India to central India. These are reports coming in from across the country, from these regions, apart from South India, of tremors jolting people yet again. But massive tragedy, of course, has unfolded in India's neighborhood in Nepal, where death and destruction can be seen everywhere. People have spent their entire night out. All right, in fact, Amir Haq, our correspondent, has now reached Lamjung. Let's listen in to the updates he's getting us from there. All right, in fact, terrifying SOS have also been received from Mount Everest, because we understand that another avalanche was triggered after the tremors today, and we received reports from one of the mountaineers who has been sending dispatches from Camp 1 Arjun Vajpayee. He says that at the moment all the people are safe, but remember, 17 casualties already from Mount Everest. Several injuries were reported yesterday after the first avalanche. All those people have been brought down to some of the closest villages where medical facilities are available. These, of course, are visuals that are coming in from Lamjung, one of the worst hit places, districts rather, in Nepal. Amir Haq, our correspondent, who was in the morning in the Gorkha district talking to people who were narrating the time of horror that they faced when the first set of tremors jolted them. In fact, those people were talking about how some of the far-flung areas have not been reached as yet by rescue teams, and that no contact has been established with them as well. In India, it is being ensured that all help is extended to Nepal in this difficult time. Home Minister Rajnath Singh held another high-level meeting this morning with the Home Secretary, as well as other officials from the Ministry of Home Affairs, as well as authorities from NDRF. More teams will be pressed into action in Nepal. The other decision that has been made is that foreigners who are stuck in Nepal will also be facilitated in evacuation. The road routes will also be opened to Nepal. That's because the air routes are already under much stress at the moment. These visuals coming in from Lamjung at the moment, one of the worst hit places. You can clearly see women and children camping outside under makeshift tents. The medical facilities too in most of these areas are not up to the mark. In fact, the Prime Minister of Nepal, Sushil Koirala, has already requested and made a plea for blood donation, but as our correspondent was pointing out earlier, that at the moment blood donation camps, conducting blood donation camps is also not a possibility. Clearly, people spending the entire night out of their homes on the streets out of fear of aftershocks, and these are people now waiting outside under makeshift tents. Many people are in a terrible situation with sanitation that has completely crumbled. People don't even have enough drinking water at the moment to make it through
today. Most of the people are too scared to step into their homes again. They are all staying in open grounds under makeshift tents. Those are the visuals that are coming from Lamjung, one of the worst affected areas. These visuals sent by our correspondent Amir Haq, who was early on in Gorkha district, where he was mentioning that all around him, all he can see is death and destruction. There are at least 7 districts in Nepal that have been majorly affected. In fact, in Kathmandu as well, some of the heritage sites have come down. The Darbar Square and many other areas have been reduced to ruins there. This is a massive human tragedy that is unfolding in Nepal. There were also reports that people are so desperate to help others move out of the rubble that they are using their bare hands in trying to remove that rubble. In fact, that situation can also be extremely dangerous, as most people are not trained in relief and rescue measures, which is a specialized thing to be done only by specified teams and authorities. But since the rescue and relief teams have not been able to so far make their way to the far-flung areas in Nepal which have been affected by the earthquake, people are now turning desperate. In Kathmandu itself, we saw panic and fear grip people who spent the entire night out on the streets consoling each other and just being too scared to go back home because of reports of aftershocks. In fact, what we've heard from the Indian Met Department this afternoon is that there have been about 2.5 dozen aftershocks that have been felt after that massive 7.9 earthquake measuring on the Richter scale that happened yesterday, and which is the highest number that has really been seen so far. ये बारपाक जो जगह है जहां सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है और जो जगह फिलहाल आउट ऑफ बाउंड्स है, यानी फिलहाल सड़क के रास्ते वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है, रास्ते पूरी तरह से बंद हैं, उसके और गोरखा के बीच वो जगह है जहां सबसे ज्यादा नुकसान शुरुआती जो भूकंप के झटके कल आए थे उसके बाद देखा गया था, आंका गया था। हालात ये हैं कि कल से लेकर अभी तक 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं भूकंप के शुरुआती झटकों के आए, लेकिन अभी भी रह रहकर कुछ देर बाद भूकंप के झटके यहां लोग महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि घरों को छोड़कर ये जो घर आप देख रहे हैं, ये जिले के लगभग टाउन एरिया में जितने घर हैं इनको लोगों ने खाली कर दिया है पूरी तरह से। और लोग आप यहां देखिए खुले आसमान के नीचे किसी तरह से टेंट लगाकर या और किन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर खुले में रह रहे हैं। यहाँ पे 100 से 125 लोग, इस पूरे इलाके के जितने घर हैं वो खुले आसमान के नीचे, पहाड़ों से दूर, पेड़ों से दूर, बिजली के खंभों से दूर यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। तो 24 घंटे पिछले कैसे गुजरे हैं, किस दहशत में, किस खौफ में गुजरे हैं, थोड़ा सा बताइए हमें। अभी जो 24 घंटे तो बीत गए हमारे लिए, जो 24 घंटे बीते हैं हमारे लिए, हम कैसे बताएं कि हमको आपको बता ही नहीं सकते। जो हमको दहशत बना रहे हैं जो 24 घंटे, वो थोड़ा रुक रुक के जो जा रहे हैं, जो पहले गया था बड़ा वाला, उसके बाद जो बाद में छोटे गए हैं, वो जो हमको दहशत दिला रहे हैं वो हमको आप हम आपको अभी तक लोग नॉर्मल नहीं हो पाए। मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके आए थे तो सब लोग एक बार फिर घरों के आसपास से निकलकर फिर खुले मैदान में आ गए। हाँ जी, हम लोग अभी तक तो जो नॉर्मल जो थी जिंदगी वो तो बिता ही नहीं पा रहे हैं। अभी जो बिता ही नहीं पा रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या बता रहे हैं। जो पहले जो गया था भूकंप उसके हिसाब से अभी जो छोटे भूकंप आ रहे हैं उसके दहशत जो है हमारे दिल में बैठे हुए हैं। हम लोग अभी घर पे जा भी नहीं रहे हैं। अभी हम लोग जो क्या नाम उसका जो भूकंपों से बाहर रह रहे हैं लगातार लोग, और दहशत इतनी जबरदस्त है कि घरों के अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है गांव के इलाके में और बाहर के इलाके में, आप में से कौन बताना चाहेगा किस तरह का नुकसान जो है बाहर के इलाके में हुआ है? जी, इस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इस बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा आदमी मर गए, समझे, ऐसे बात है। पूरे जिले में किस तरह के नुकसान को आप समझ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ होगा? अभी पूरे जिले में नुकसान का इतना अंदाजा नहीं हो पा रहा है हमें,
और नहीं, जाहिर है बिजली पूरी तरह से गई हुई थी। अभी कुछ थोड़ी देर के लिए बीच में आई है एक आध बार चेक करने के लिए, उसके अलावा फोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में बाहर के जिलों से पूरी तरह से कटे हुए हैं। लेकिन आपके जो रिश्तेदार हैं आसपास के इलाके में रहने वाले या काठमांडू या पोखरा की तरफ रहने वाले, उनसे कैसे संपर्क साधा है आपने? अभी तो फिलहाल चल ही रहा है, ये नेटवर्क चल रहा है उसका फोन का बात चल रहा है, इसीलिए वो उनसे बातचीत हो रही है, वो पता लग रहा है। लोग जो है अभी इंजर्ड हैं, घायल हैं, जिनको अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, क्योंकि यहाँ से अभी थोड़ी दूरी पर जिला अस्पताल है। आपको क्या अंदाजा है, एम्बुलेंस की आवाजाही लगातार बनी हुई है? बनी हुई है। सवेरे से लेके अब तक 5, 4, 10, 8 वो एम्बुलेंस जा चुकी है बेसी शहर हॉस्पिटल की तरफ। और हेलीकॉप्टर सॉर्टीज जो हो रही हैं, उनको आप देख रहे हैं लगातार बारपाक से पोखरा की तरफ, बारपाक से पोखरा की तरफ जा रही है। वो भी 5-6 ट्रिप जा चुकी है। जी बिल्कुल। तो ये ठीक, ये हमारे पीछे जो पहाड़ी है, इसके पीछे बारपाक का इलाका है, जो यहाँ और गोरखा जो दूसरा जिला है नेपाल का, जो कि बहुत बुरी तरह प्रभावित है, उसके बीच का इलाका है। उसके ऊपर से चूंकि जाने का कोई रास्ता नहीं है सड़क मार्ग से, इसलिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके आर्मी के लोग, नेपाल आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग किसी तरह से वहां से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, और मलबे से जो लोग जिंदा बच पाए हैं उनको भी पोखरा पहुंचाने का, क्योंकि नियरेस्ट जो बड़ा स्टेशन है वो पोखरा ही है। यहाँ महिलाएं भी हैं, हम पूछेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोगों के साथ, किस तरह की तकलीफ हो रही है खुले में रहने पे? हिंदी नहीं जानदैन, नहीं, छोटे बच्चे जिस तरह से यहाँ रह रहे हैं, किस तरह से आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं उनको बाहर रखना और घरों से दूर रखना, उनके किसी तरह के नुकसान से उनको बचाना? इसके बारे में तो पहले पुलिस प्रशासन ने पहले आके कह दिया था, अपने घर को छोड़कर बाहर टेंट लगा के, तंबू लगा के अपनी जान की बचाव करो, तारों के से बचो, अपने घर से, बिल्डिंग से दूर रहो, खुले जगह पे जाके टेंट लगा के रहना। पुलिस ने तो ये है लामजुंग की स्थिति। अभी भी भूकंप के 24 घंटे बाद, अब से थोड़ी देर पहले कुछ और झटके आए थे, जो जाहिर है हिंदुस्तान में भी महसूस किए गए, लेकिन यहाँ पर जो पैनिक की स्थिति है, जो घबराहट की स्थिति है, खौफ की स्थिति है, वो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इन लोगों ने करीब से वो मौत का मंजर देखा है जब बहुत से मकान यहाँ पर दरक गए, और बाहरी जितने इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, गाँव के इलाके हैं, जहाँ कच्चे मकान हैं, उनमें से ज़्यादा मकान ढह चुके हैं। Right, people living under open skies in makeshift tents. Report being sent by Amir Haq from Lamjung. He's reached one of the far-flung areas where relief and rescue is just about trickling in at the moment. The injured are being taken to Pokhara, where medical facilities are being made available. He also tells us, and when he was speaking to people, they were explaining how there have been power outages. There has been poor phone connectivity, because of which people are struggling to stay in touch with their near and dear ones from across other districts. From Lamjung, one of the badly hurt areas of the initial earthquake that shook this part of Nepal yesterday. Well, most of these people out here in this community, at least 4 dozen plus houses, all these people out here are living together under this makeshift tent. More than 100 to 125 people have taken shelter out here. Last night had been really difficult for these people, because these tremors had been going on throughout the day, throughout the night, and even now, just about some 45 minutes back, we all here could actually feel the tremors happening again. So now these people are so scared that they don't want to go back to their places, also because the epicenter was so close, and whatever they've heard through the newspapers, through whatever they could speak to their relatives living in other cities, they have actually been very, very horrified. ये बताइए कि अभी स्थिति क्या है, कितना नुकसान हुआ है लामजुंग में, क्योंकि बड़े स्तर पे नुकसान की आशंका थी। यहाँ पास में एपिसेंटर केंद्र था अर्थक्वेक का। अभी जो इधर सेंटर जो ये अर्थक्वेक का था, उसका जो
लीगल जो अर्थक्वेक का रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब से वो जो जितना नुकसान हुआ है वो तो अभी पता नहीं चला है। अभी गवर्नमेंट ही बता नहीं सक रहा, हम कैसे बता पाएंगे? मतलब टाउन एरिया से ज्यादा नुकसान विलेज एरियाज में है? हाँ, टाउन एरिया से ज्यादा विलेज एरिया में तो एब्सोल्युटली है। अभी जो हमारा जो तस्यो गांव है उसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब बारपा का जो गांव था वो भी बचा ही नहीं है। ऐसा हमको भी इतना मालूम नहीं है कि जितना जो बता रहे हैं वो तो हमको इतना मालूम नहीं है, हम देखे नहीं है। फिर भी जो लोग बता रहे हैं हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। जो हमारा 2-3 गांव था, 3-4 गांव था, वो तो अभी रहा ही नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। जो अब जैसे कॉरेस्पॉन्डेंट लोग हैं वो लोग बता रहे हैं, हमको तो इतना मालूम नहीं है। अभी जो एब्सोल्युटली नुकसान हुआ है वो तो हमको 2-3 दिन बाद पता चलेगा। अभी द बारपाक एरिया दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, द मेन सेंटर ऑफ अर्थक्वेक इज राइट बिहाइंड this mountain behind me. The road have become absolutely inaccessible for the people out here. So it's only the Air Force and Army sorties that are happening on the helicopters that these people here have been witnessing for over 24 hours now. लेकिन बच्चों की क्या हालत है? हम देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं, बच्चे, सब लोग बाहर खुले में रहने को मजबूर हैं। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? हम तो बच्चों, मर्द, महिला सबका वैसे हालत है जैसा आप लोग देख रहे हैं। कल तो फोन भी काम नहीं कर रहा था। सब लोग इतना तरस गए थे, इतना डर गए थे, क्या बताए। अब तो फोन भी काम कर रहा है, जगह जगह का खबर पता लग रहा है, सब लोग एक ही जगह पर बैठ रहा है। अभी तो सब लोग है ना, ऐसा नॉर्मल तो नहीं हुआ, पर कल से थोड़ा थोड़ा बेहतर लग रहा है। डर अभी भी है, दहशत बनी हुई है क्योंकि रुक रुक के ये ट्रेमर्स आ रहे हैं। हाँ, आ रहा है, लेकिन कल से अभी थोड़ी नॉर्मल हो पा रहे हैं हम। जाहिर है, well, the people have almost become used to these tremors, but definitely the kind of fear it has instilled among people will not die down very soon. So they are planning another night out in the open again today. आप बता रहे थे कि अभी तक एम्बुलेंसेस का आना जाना जारी है। यहाँ पास के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको क्या लगता है कितने पेशेंट्स होंगे? उसके गाड़ी गए अंदाजे से तो कोई होंगे 60-70 पेशेंट होंगे, हमें इतने अंदाजा है। बाकी पेशेंट्स को बाहर दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया है, पोखरा में या काठमांडू की तरफ? हाँ जी, हाँ जी। ज़्यादा जो सीरियस वाले हैं पोखरा भेज रहे हैं, जो नॉर्मली है यहाँ 20 शहर भेज रहे हैं इसी डिस्ट्रिक्ट से। क्या प्रशासन ने कोई उपाय किया है किसी तरह से जो मकान जिनमें क्रैक्स पड़ गए हैं उनको किसी तरह से या तो ढहाया जाए या बचाया जाए कि वो और आगे नुकसान फर्दर ना हो उनसे? प्रशासन ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाया अभी। सिर्फ पुलिस प्रशासन से यही आश्वासन मिला है कि आप लोग अपने घर को छोड़कर खुले स्थान में जाके टेंट लगा के अपनी जान की बचाओ, इतने हमें पुलिस प्रशासन से मिली है। कब उम्मीद है आपको कि ये खौफ का माहौल थोड़ा सा थमेगा और आप लोग वापस अपने घरों को जा पाएंगे? अभी इसके बारे में तो कुदरत का देन है, कब कुदरत इसको हटाएगा, कब तक रहेगा पता ही नहीं है अभी। आपने कभी अपनी जिंदगी में इतना भयानक भूकंप देखा है? कभी नहीं देखा है। इतना हमने सुना है कि 90 साल पे गया था इतने बड़ा भूचाल, उसके बाद अब हुआ है बता रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का कहना है। Well, so anxious moments still there for these people because obviously they understand this has been a once in a lifetime experience for them, and a very horrid experience for that matter. Amir Haq, their first journalist to have reached close to the epicenter of yesterday's earthquake. He's close to Pokhara in Lamchung, getting us that report of people staying under the skies in makeshift tents because authorities have told them not to go back home out of fear of aftershocks. People there saying that this is the worst that they've seen ever in 90 long years. This earthquake that has jolted them has been the strongest.